हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. डिफाइन स्फीनोगैमी. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट द टर्म स्फीनोगैमी. So basically, over the course of evolution, from algae to bryophytes to pteridophytes, finally gymnosperms plants में देखी गई development of pollen tube for the transfer of male gamete to the egg. जो जिम्नोस्पर्म्स थे उनमें एक ट्यूब की डेवलपमेंट देखी गई जो कैरी करती थी मेल गेमेट्स टू द फीमेल सो दैट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और syngamy can occur in a synchronized way and can result into the formation of fertile zygote. So वो जो ट्यूब थी that was referred as pollen tube and hence sphenogamy is defined as the development of pollen tube for the transfer of male gametes to egg to carry out the process of syngamy or the fertilization, which is the fusion of male and the female gamete. Now if we look at the groups, वो particular plant kingdom के groups जो show करते हैं the development of pollen tube or the sphenogamy are as follows. Firstly were the gymnosperms, which includes plants like cycas, ginkgo, sequoia, and जो second group था that included angiosperms, which are also referred as flowering plants of plant kingdom. Now if we look at the process of sphenogamy for the angiosperms, it is as follows. जो एंजियोस्पर्मिक फीमेल प्लांट होता है वो बेसिकली तीन स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है. इट हैज थ्री बेसिक स्ट्रक्चर्स दैट आर. फर्स्टली इज द स्टिग्मा जो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को. सेकंड इज द स्टाइल जिसके थ्रू डेवलपमेंट होती है पोलन ट्यूब की. पोलन ट्यूब passes through style to reach the ovary, which is the basal bulged out part of the pistil, and in the ovary is present the ovule attached with the funicle, and finally जो ovule होता है उसके अंदर present होता है the female gametophyte, which is the embryo sac which contains the egg cell, the female egg cell. जब एक पोलन ग्रेन लैंड करती है स्टिग्मा पे, जब स्टिग्मा रिसीव करती है एक पोलन ग्रेन को, देयर इज अ केमिकल डायलॉग बिटवीन द स्टिग्मा एंड द पोलन ग्रेन, एंड जब इनकी कंपैटिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है and the pollen grain germinates on the stigma, then we can see the development of a pollen tube through the style जो पास करती है स्टाइल के थ्रू and finally reaches the embryo sac and वो shed कर देती है the male gametes which passes through the pollen tube in the egg cell. एक मेल गैमेट रिसीव होता है बाय द egg cell जो शो करता है द प्रोसेस ऑफ syngamy which results in the formation of zygote, and जो अदर मेल गैमेट है it is received by the polar nuclei to show triple fusion and form a triploid tissue that is the endosperm जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन to the developing zygote. Hence concluding जो sphenogamy है it is the process of development of pollen tube to accomplish a synchronized fertilization. So I hope you must have understood it well. All the best.